Welcome students. Today we will teach you about the work and energy. Physics chapter 11. Work. Work is said to be the done whenever the force act on the body and the body moves in the direction of the force. When an engine applies force on the train moves, so work is said to be done by the engine. The work done by the force and the body depends on the two factors. First point, magnitude of the force, and second, distance through which the body moves in the direction of the force. Work done in moving a body is equal to the product of the force exerted on the body and this distance moved by the body in the direction of force. Work is equal to force into distance, move in the direction of force, but usually we write work is equal to force into distance, or W is equal to F into S. Unit of work. Work is the product of the force and distance. Now, unit of force is Newton N and that of distance is meter M. So, the unit of work is Newton meter, which is write as Nm. This unit of work is called joule, which can be defined as flow. When a force of 1 Newton moves on the body through at the distance of 1 meter is its on the direction, then the work done is known as 1 joule. That is, देखो इसमें बताई गई है कि वर्क जो होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस, और इसका यूनिट जो है, नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एन एंड दैट इज डिस्टेंस एन. Distance of the SI unit is meter and the force of the SI unit is Newton. The multiples of N into M. So the unit of work is Newton meter, which is right as Nm. This unit of work is called joule, which can be defined as Nm. वर्क का जो ऐसा यूनिट है वह जूल है. सपोज दैट 1 न्यूटन, डिफाइन ऑफ द 1 न्यूटन. तो वेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, when a force of 1 Newton moves in the body through and the distance of 1 meter, it is the direction that is work done is known as 1 joule. Define of 1 joule. 1 जूल को कैसे बता सकते हैं कि 1 जूल डिफाइन आपको कह देगा कि 1 जूल को डिफाइन करिए, तो आपको बताना होगा कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ऑन द बॉडी थ्रू एंड द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इट्स ऑन द डायरेक्शन. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर वह अगर ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर का उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर 1 मीटर डिस्प्लेस होती है तो वो ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क करता है. ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर और 1 जूल इज इक्वल टू 1 Nm. तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. वर्क का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, विच इज डोनेटेड बाय द लेटर J. और जूल को जो है लेटर J से इंडिकेट की जाती है. Work is the scalar quantity. It should be noted that in the condition of the force to do work is that is should produce motion in the object. ठीक है, और वर्क जो है
वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डायरेक्शन का इसमें पता नहीं चलती है, लेकिन इसमें जो होती है मैग्नीट्यूड होती है। सपोज दैट वन मैन पुश अ वॉल, when a force is applied on the ball by pushing it, ball does not move, no work done of the ball। एक आदमी है वह बॉल पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है, ठीक है, बट बॉल इज नॉट मूव, बॉल जो है वह मूव नहीं करता है। तो वही बोला नो वर्क इज डन ऑफ द बॉल, वह बॉल पे, वह दीवार पर कोई भी वह कार्य नहीं किया है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही बात होती है, ठीक है। ए मैन वे गेट कंप्लीटली exhausted in trying to push the stationary ball, but since there is no displacement, the ball does not move, the work done by the man of the ball is zero। बॉल तो खिसकता नहीं है, बॉल डिस्प्लेस नहीं होती है, इसीलिए वो आदमी ने कितना वर्क किया, जीरो किया है, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, when where work is done against gravity, the amount of work done is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which in the body is lifted। Suppose a body of mass m is lifted vertical over through a distance h. In this case, the force required to lift the body will be equal to weight of the body m into g, when m is the mass and g is the acceleration due to gravity. Now work done in lifting a body is equal to weight of the body into vertical distance। वन मैन, अब देखिए ये एक आदमी है, उस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आदमी का अपना एक वेट भी तो होगा, है ना, ये आदमी का क्या है, एक अपना वेट है, ठीक है, और ये आदमी का मास भी है। तो वेट, आदमी का वेट जैसे निकालेंगे तो आपने पढ़ा था ना, W=mg, और ये हाइट है, ठीक है, ये क्या है, हाइट है। तो W=mgh according to gravity, where m is equal to mass of the body and W is equal to work done, g is equal to acceleration due to gravity and h is equal to height through which in the body is lifted। How much work is done by in the force of 10 Newton? These questions, numerical questions, how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force? The solution of the work done is calculated by using the formula W is equal to F into S. Here force is equal to 10 Newton and distance S is equal to 1 meter. So work done 10 into 1 joule is equal to 10 joule, thus in the work done is 10 joule, ठीक है। This solution of the questions। Next question, second, calculate the work done in the lifting 200 kg of the water through a vertical height of 6 meter। Assume g is equal to 10 meter per second square। g का वैल्यू कितना इसमें लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है। In this case, work is being done against gravity in lifting water। Now in the formula 4, calculating the work done against gravity is W is equal to mgh। Here mass of the water m is equal to 200 kg, acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second square, and height h is equal to 6 meter। Now putting this value in the above formula we get W is equal to 200 into 10 into 6 is equal to 12,000 joule, thus in the work done is 12,000 joules। This is answer।
Formula for work done when in the body moves in the angle 2 in the direction of the force. The work done in the pulling the body will be equal to the product of horizontal component of the force and distance moved by the body. In its case, the horizontal component of force F is F cos theta and the distance moved in work done. W is equal to F cos theta into S, where F is equal to force applied, theta is equal to angle between the direction of the force and direction of the motion, and S is equal to distance moved. On W is equal to F d cos theta, S is equal to D या F S cos theta. ठीक है, यानी यह बताई गई है अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट को हम खिसकाते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस उत्पत्ति है ना यहाँ, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन फोर्स जितना लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है एक आपका एंगल भी बनती है. Cos 0 degree is equal to 1. Calculation. This chart calculation of the numerical question is the helpful. Cos 0 degree is equal to 1. Cos 30 degree is equal to root 3 by 2. Cos 45 degree is equal to 1 upon root 2. And cos 60 degree is equal to 1 by 2. And cos 90 degree is equal to 0. Thank you. Next class.